नहीं, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं। Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome to the special Ek Villain album series. We have already covered the song Teri Galiyan on both girls and boys scale. Also I have given the chords with capo. तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये ट्यूटोरियल नहीं देखा है, you can go and check out in the description box. I'll drop the link. For today's tutorial, maximum comments आए थे हमदर्द सॉन्ग के लिए, तो आज हम हमदर्द सॉन्ग करेंगे by अरिजीत सिंह. And for the next video of एक विलन album, you can suggest me in the comment section कि आपको next song अब कौन सा चाहिए. For the song हमदर्द मैं आपको girls and boys दोनों के स्केल पे बताऊंगी. Also I'll tell you the chords with capo. Before starting with today's tutorial, let me remind you about the course on shifting of chords, which is completely for absolute beginners. In this course, you will get to learn all the open chords, right hand technique, tips and tricks on shifting of chords, how to hold a pick in the right way, how to do strumming in the right way, how to read the chord charts, basic chord shifting patterns, basic strumming patterns, and how to sing your first song on guitar. The one-time cost of this course is 1,999. You will get a lifetime access to the course videos. Let me also elaborate about the course features which will be accessible to you for 2 months. So the course features are course induction session, active instructor support, live one-on-one doubt clearing sessions, assignments and quizzes, project evaluation and group live sessions. The link to the website and contact details are given in the description box. In case of any queries, you can contact us through email and WhatsApp. Now without further ado, let us begin with today's tutorial. But before starting, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon also, so that you can get all the notifications and updates from my channel. अब शुरू करते हैं with today's tutorial. I am playing this song in the key of B major क्योंकि A major मुझे थोड़ा सा low पड़ रहा था. And to play this song in the key of B major, I have placed the capo on the 2nd fret. You will play the chords A major, F sharp minor. This is E minor. E minor को आप 1 and 2 frets आगे लेके जाओगे and by changing the position of your fingers, free your middle finger also and place a bar. This is F sharp minor. The next chord is D major. Then C sharp minor. How you will hold C sharp minor? This is A minor. A minor को आप 1, 2, 3 and 4 frets आगे लेके जाओगे and by changing the position of your fingers, free your index finger and place a bar. This is C sharp minor. The next chord is E major. तो क्या chords हो गई? A major, F sharp minor, D major, C sharp minor and E major. Now if you don't want to use a capo, you can remove the capo and you can play the same chords A major, F sharp minor, D major, C sharp minor and E major. सिर्फ स्केल चेंज हो जाएगा, बाकी chords आप वही प्ले करोगे. अब देखते हैं कि बॉयज़ का स्केल क्या होगा. बॉयज़ का स्केल होगा ई मेजर एंड द कॉर्ड्स आर ई मेजर, सी शार्प माइनर, ए मेजर, जी शार्प माइनर. हाउ यू विल होल्ड जी शार्प माइनर? दिस इज ई माइनर. ई माइनर को आप 1, 2, 3 एंड 4 फ्रेट्स आगे लेके जाओगे एंड बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ योर फिंगर्स, फ्री योर मिडिल फिंगर ऑल्सो एंड प्लेस अ बार. दिस इज जी शार्प माइनर. द नेक्स्ट कॉर्ड इज बी मेजर. This was A major. A major को आप 1 and 2 frets आगे लेके जाओगे and using your index finger place a bar on the 2nd fret. This becomes B major in bar. And if you will place your index finger on the 2nd fret first string like this, this will become B major in open. तो क्या chords हो गई? E major, C sharp minor, A major, G sharp minor and B major. Let's compare these chords with my scale. जहाँ पर मैं A major play करूँगी, there you will play E major. जहाँ पर मैं F sharp minor play करूँगी, there you will play C sharp minor. जहाँ पर मैं D major play करूँगी, there you will play A major. जहाँ पर मैं C sharp minor play करूँगी, there you will play G sharp minor. और जहाँ पर मैं E major play करूँगी, there you will play B major. Now if you are a beginner and you don't know how to play the bar chords, you can play this song on C major. उस पे सारी chords open use होंगी. So the chords are C major, A minor, F major, E minor and G major. Let's compare these chords with my scale. जहाँ पर मैं A major play करूँगी, there beginners will play C major. जहाँ पर मैं F sharp minor play करूँगी, there you will play A minor. जहाँ पर मैं D मेजर प्ले करूँगी, there you will play F मेजर.
जहाँ पर मैं सी शार्प माइनर प्ले करूँगी, देयर यू विल प्ले ई माइनर, और जहाँ पर मैं ई मेजर प्ले करूँगी, देयर यू विल प्ले जी मेजर. नाउ द स्ट्रमिंग पैटर्न फॉर दिस सॉन्ग विल बी डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, down up down up down up down up down, adding a joiner or a filler to it. Down up down up down up down up down, down up, this down up is your joiner. After adding the joiner, down up down up down up down up down, down up down up down up down up down up down, down up down up down up down up down up down. पल दो पल कि क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियाँ काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत मैं एक नहीं, रहना बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है. मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है. I hope you like the song. If yes, do hit the like button. Also just let me know in the comment section कि मुझे next tutorial कौन सा करना चाहिए for एक villain album, ज़रूरत या बंजारा. And if you are having any doubts related to today's tutorial, you can post it on my Facebook community page, which is Music Ki Pathshala, the link to which is given in the description box and comment section. Before signing off, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon also. I will see you soon in the next tutorial. You all take care. Bye. मोहलत मैं एक नहीं, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा